हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आमे पेडागोजी एवं इवैल्यूएशन रो आउ 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। सब बेले मने रखंतु, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। तेणु निज उपरे सब बेले विश्वास भरोसा रखंतु। फर्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर notices that a child can solve problems with hints but not independently. This reflects conditioning, trial and error, zone of proximal development, cognitive conflict. ପିଲାଟି ନିଜେ କରିପାରୁନି, hints ଦ୍ୱାରା କରିପାରୁଛି, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? zone of proximal development. Which theory emphasizes learning through imitation? ପିଲାଟି imitation ଦ୍ୱାରା ଶିଖୁଛି। cognitive theory, constructive theory, social learning theory, gestalt theory. କ'ଣ ହେଇଯିବ? social learning theory. କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବାନ୍ଦୁରା। Child making mistakes while learning indicates failure, nature of learning, lack of intelligence, teachers ineffective teaching only. ପିଲାଟି ପଢିଲା ବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛି। ଭୁଲ କରିବାଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି? ନେଚର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭୁଲ କରିବାଟା ଫେଲିୟର ନୁହେଁ କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଲେକ୍ ନୁହେଁ କି ଟିଚରଙ୍କର ପଢ଼ାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ପିଲାର ଭୁଲ କରିବା ହେଉଛି ନେଚର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। Which assessment practice is most aligned with constructivism? End-term standardized test, daily written test, portfolio assessment, objective type test. आ भितरु केउ असेसमेंटा कंस्ट्रक्टिविज्म सहित अलाइन करूची? कौन हेजिबो आंसर? पोर्टफोलियो असेसमेंट। कारण पोर्टफोलियो होची सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। टीचर पिल्लांक पाखरु टाइम टू टाइम असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ड्राइंग सब कलेक्ट करंती। तेणु पोर्टफोलियो असेसमेंट कंस्ट्रक्टिविज्म सहित अलाइन करे। According to Vygotsky, learning proceeds development when child interacts socially, child memorizes content, child works only, child practices repeatedly. कौन हेजिबा आंसर? Vygotsky देइची। Vygotsky theory social culture, तो हेजिबो child interact socially. Which situation shows misuse of evaluation? Providing feedback, identifying learning gaps, labeling students as weak, modifying instruction. Evaluation रो misuse को केउटा देखौची? लेबलिंग स्टूडेंट्स एज वीक। आमे केबे भी पिल्ला को लेबल करिवा नाही कि सी भल पढुची, ये खराब पढुची, ये दुर्बल, एमिति आमे केबे भी लेबल करिवा नाही। टीचर यूजेस peer assessment frequently. The greatest risk involved is जणे टीचर सब बेले peer assessment करंती। peer assessment रो अर्थ पिल्ला माने निज सांग मानकर खाता को चेक करिवे। कौन रिस्क को इन्वॉल्व करूची? reduced motivation, time consumption, lack of syllabus coverage, subjectivity and bias. कौन हेजिबो? डी, subjectivity and bias। काहे कि काहे जते बेले जने सांग छुआर खाता देखिबो से कहबो से मो सांगडा मते टी अधिक मार्क दे दिए। आउ जदि छुआ के ता खाता देखिले जदि तार ता सहित पढु नथिबो तो से कह कि से मते खाली चॉकलेट देथलानी मु कहि ताको अधिक मार्क देमी, से तार टी मार्क कमाई देबो। तो एटा सब्जेक्टिविटी हेजिबो। If a teacher focuses only on correct answers and ignores reasoning, the assessment primarily targets high order thinking, metacognition, surface learning, transfer of learning. जने टीचर खाली करेक्ट आंसर को फोकस करचंती तोटा केउ प्रकार लर्निंग हेजिबो? सरफेस लर्निंग। If students study only to score marks, the evaluation system is encouraging mastery orientation, performance oriented, intrinsic motivation, self regulated learning. पिलाटी केवल मार्क पई पढुची आउ किछि नुहे। मास्टरी ओरिएंटेशन हबनी। मास्टरी ओरिएंटेशन अर्थ जिनसटा को भल भाबरे बुझिबा, ताको कामरे लगेबा। इंट्रेस्टिंग मोटिवेशन भी हबनी कारण से मार्क पई पढुची, तार लक्ष्य गुटे मार्क, निज मनरु इच्छा करके पढु नाही। तो आंसर हे जिवो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड।
Exertion ଦେଇଛି formative assessment improves learning outcomes. Formative assessment ଟା learning outcome को improve करे. Output अलगा, outcome अलगा बुझेଇଥିଲି. Output ହଉଛି କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲା, ସେଇ ମାର୍କଟା ହଉଛି output. କିନ୍ତୁ outcome ହଉଛି ପିଲାର ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କେତେ ଦକ୍ଷତା ଆସିଯାଇଛି, ସେଟା ହଉଛି outcome. Formative assessment learning outcome କୁ improve करे. ଠିକ ଅଛି. It provides continuous feedback during instruction. ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସମୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇ ଚାଲେ. ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତେଣୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବି ଅନଗୋଇଂ ଦିଆଯିବା ଦରକାର. ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ both A and R true and R explains A. According to Piaget, a child can understand conservation at which stage? Sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. କନଜରଭେସନ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସରୁ ନଳୀରେ ପାଣି ପୂରେଇକି ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅସାରିଆ ନଳୀରେ ପୂରେଇକି ଦେଖେଇଲେ, ତ ପିଲାଟି ଭାବିବ ଯେ ଅସାରିଆ ନଳୀରେ କମ ପାଣି ଅଛି ଏବଂ ସରୁ ନଳୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଜଳସ୍ତର ପରିମାଣଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ. ସେ ଏଠି କନଜରଭେସନ କରିପାରୁ ନାହିଁ. ଏଠି କନଜରଭେସନ ଲେକ୍ ହେଉଛି. ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ? ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ. କିନ୍ତୁ ସେ କନଜରଭେସନ କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ, କେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନା ଦୁଇଟା ଯାକର ପାଣି ସ୍ତର ସମାନ ଅଛି? concrete operational stage ରେ. ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ concrete operational. According to Brunner, learning is most effective when it is passive, it is guided and involves discovery, only facts are memorized, drill method is followed. ବ୍ରୁନରଙ୍କ ହିସାବରେ ଲର୍ନିଂ କେତେବେଳେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବ? when it is guided and involves discovery. According to Brunner, spiral curriculum means same concept repeated without change, revisiting concepts with increasing complexity, teaching only once, memorization of facts. Spiral curriculum ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟକୁ ରିଭାଇଜ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ଥର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ଲର୍ନିଂଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ. ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରିଭାଇଜିଟିଂ କନସେପ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି. Formal operational stage begins roughly at 2 to 7 years, 7 to 11 years, 11 plus years, birth to 2 years. आंसर कौन ହେଇଯିବ? birth to 2 years ହେଉଛି sensory motor stage, 2 to 7 pre operational, 7 to 11 concrete operational, 11 plus ହେଉଛି formal operational. ତ आंसर ହେଇଯିବ 11 plus years. Experiential learning helps children memorize facts, apply knowledge in real situation, copy answers, follow routine blindly. Experiential learning कौन help करे? apply knowledge in real situation. निज knowledge को real situation रे apply करिबा. CWSN stands for Children with Special Needs, Classroom with Special Numbers, Child Welfare Student Network, Children with Standard Need. CWSN ର full form କ'ଣ? Children with Special Needs. Interactive TLMs include smartboards and educational software, chalkboard only, oral lecture, memorization drill. Interactive TLM କ'ଣ? smartboards and educational software. ଏଥିରେ ଆମେ interact କରିପାରୁ. Universal Design for Learning UDL aims to focus only on high achieving students, segregate children with disabilities, only increase syllabus coverage, make learning accessible to all learners. କ'ଣ ହେଇଯିବ? UDL ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? make learning accessible to all learners. Assistive devices for mobility impaired students include braille books, flashcards, wheelchairs and ramps, loud lectures. Mobility impaired ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? wheelchairs and ramps. In an MCQ, the part that contains the question is called distractor, stem,
की ऑप्शन एमसीक्यू रे क्वेश्चन पैटर्न को हमें कौन कहिबा एटा गोटे एमसीक्यू ए जे क्वेश्चन टा रेड कलर रे लिखा जाय जे एटा को हमें कौन कहिबा स्टेम एवं जेटा आंसर एथरे आंसर केटा हैला बीटा तो एटा होची आंसर को छाडी के आउ जो रहिले ऑप्शन ए सी आउ डी एटा हैला डिस्ट्रैक्टर कारण ए ऑप्शन गुडा का कौन करंती उत्तर खोजिबारे हमको डिस्ट्रैक्ट करंती What is the first step in the learning process? आम लर्निंग प्रोसेस रे फर्स्ट स्टेप कोटा एप्लीकेशन रिइंफोर्समेंट रेस्पॉन्स मोटिवेशन फास्ट मोटिवेशन दरकार मोटिवेट हेले ही पिला पाठ पढ़िबो The statement learning is a lifelong process means learning happens only in school learning केवल स्कूल रे हुए learning continues throughout life learning जीवन सारा होता है learning stops after graduation learning टा ग्रेजुएशन परे बंद हो जाए learning is only for children learning टा केवल पिला मानक पई learning is a lifelong process आ अर्थ कोन learning continues throughout life which of the following is not a component of the learning process आ भितरो learning process रो component केटा नुहे motivation एटा component experience एटा भी component feedback एटा भी component punishment टा component नुहे who developed client centered therapy किए डेवलप करथिले सिगमंड फ्रॉयड कार्ल रोजर्स जीन पियाजेट ना लेव बाइगोट्स्की हे जिवो कार्ल रोजर्स काले में पुणी 24 क्वेश्चन आनिबा धन्यवाद।